we have done chapter center-state relations. In this lesson, we are going to do questions and answers from the same topic. Let us start. Let us do first. Let me take the marker first. Good morning, Malki Singh Khalsa ji. Okay. Let us begin with the first question. First question is, how many lists are there for center-state legislative powers, or how many lists for center-state legislative powers? Baldev Kumar has, sir. Jai Ram, good morning. Gai Ram, Jai. Okay. ठीक है जी. In center-state relationship, if you talk about, there are mainly three kind of center-state relationship. Right, as I have told you, legislative relationship and administrative relationship and financial relationship. First question is, how many lists of center-state legislative powers are there? It means if we talk about the legislative relationship between center and state, how many lists are there? There are three lists: center list, state list and concurrent list. Sahil, good morning बच्चे, good morning. उसके बाद है, name the three of the center state legislative powers: the union list, state list and concurrent list. How much subjects included in union list? How many? How much नहीं आएगा. How many subjects are included in the union list? Question should be like this. Roma Chauhan, good morning sir ji. Good morning बच्चे. There are 98 subjects. Now earlier it was 97. How many subjects are included in the state list? In the state list now there are only 59 subjects. Earlier it was 62. Then it decreased to 62. Now it is 59. अभी 59 है. Right, anyone union parliament gets power to make law on the state list. If a regulation is passed by Rajya Sabha, they can make power on state list. इसके अलावा अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करती है स्टेट लिस्ट पे बनाने के लिए, देन ऑल्सो मेक. तो ये कंडीशंस हैं. उसके अलावा इमरजेंसी के सिचुएशन में और ट्रीटीज को लागू करने के लिए भी दे कैन मेक लेजिस्लेशन और लॉ ऑन स्टेट लिस्ट. आगे इन इंडिया रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन द यूनियन पार्लियामेंट. ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है. तीन लिस्ट के अलावा जो पावर्स बच जाती है, तीन लिस्ट एज आई हैव टोल्ड यू, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद रेजिडरी यानी कि बचे हुए पावर जो बच जाते हैं, इट गोज टू सेंटर. ये सब सेंटर में वेस्ट करता है, वेस्टेड विद द सेंटर. नेक्स्ट इज डैश. इन डैश आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेजिडरी पावर इंक्लूडेड 248 में ये इंक्लूड किया गया है. देन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फाइनेंस कमीशन. आर्टिकल 280 प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन को. ये रट्टे मारने वाले हैं, यू जस्ट मेमोराइज इट. नेक्स्ट, डैश एंड डैश बोथ गवर्नमेंट्स कैन मेक द लॉज ऑन द कंकरेंट लिस्ट. यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट मैंने जैसे आपको बताया था कि तीन लिस्ट है. देयर आर थ्री लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट पे दोनों ही लॉ बना सकते हैं. बोथ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट. बट व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो मेड लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल करेगा स्टेट गवर्नमेंट पे. कीप इन माइंड. इज गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? यहाँ पे अपॉइंटेड आना चाहिए बच्चे. अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. यस, ट्रू. गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट on the recommendation of the Prime Minister and his team, Council of Ministers. 2 marks question. ये पहले एक नंबर वाले क्वेश्चन थे. आप लोग
कोई क्वेश्चन है या तो बताओ। लाइक कर दो क्लास को और शेयर भी कर दो प्लीज सभी अपने दोस्तों के साथ। लाइक एंड शेयर द क्लास। यस बच्चे, साहिल क्लास अपने क्या कहते हैं, कोई डाउट यहां तक? साहिल, रोमा चौहान, बलदेव कुमार, मलकीत सिंह, एनी डाउट? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब यूनियन लिस्ट। Union list consists of 98 subjects or items. Earlier there were 97 subjects in it. Okay, the subject of the national importance or the subject which are concerned with the entire country are placed in the union list. The union parliament has power to make law on it. तो ये था union list. What provision are available for residuary? What provisions are available for residuary powers in India? Residuary powers means the power to legislate in respect of the subjects which have not been mentioned in state list, concurrent list or the center list. In India, the residuary power is vested in Union Parliament. Okay, गरिमा, बलदेव कुमार गरिमा है, राइट बच्चे। तो रेजिडरी पावर किसके पास है? इट इज विथ द यूनियन पार्लियामेंट, बस इतना है। जितने भी लिस्ट हैं उसके अलावा जो पावर बच जाती हैं, यू विल से दैट देयर आर 3 लिस्ट एंड आउट ऑफ दोज 3 लिस्ट विच एवर सब्जेक्ट इज पेंडिंग और विच एवर सब्जेक्ट is not included on those 3 lists is sole authority of Union Parliament. Union Parliament will make law on those 3 out of those 3 list. तो रेजिडरी पावर जो है, जो बच गया है, वो सब सेंटर के पास होता है। What do you mean by concurrent list? Concurrent list is list. It is consist of 47 originally, 47 subjects. Now it has increased to 52. The subjects which are common to the sufficient number of the state are placed in this list. Common है जो states से related है। Union and states government both can make laws on it. तो concurrent list पे दोनों ही union as well as state can make laws, कानून बना सकते हैं दोनों। Finance Commission. What is Finance Commission? Article provides for the constitution of a finance commission. According to article 280 article, state can appoint finance commission. यानी कि देश में फाइनेंस कमीशन की स्थापना की जा सकती है। The duty of this commission is to make suggestions. इसका क्या ड्यूटी है? सजेशन करना किसको? To president about the distribution of finance. ये जितनी भी फाइनेंस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, मीन्स बिटवीन द यूनियन स्टेट और यूनियन के बीच में जो पैसे का बंटवारा होता है, टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट होते हैं, वो कैसे होंगे, ये सब में वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं फाइनेंस कमीशन। हु अपॉइंट्स द स्टेट गवर्नर्स? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू अपॉइंट द गवर्नर। ही अपॉइंट्स गवर्नर विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दैट्स फाइन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसको एडवाइस पे गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 इज बेसिकली एमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी के लिए आर्टिकल है। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट वेयर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन और हैज फेल्ड। यानी कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल नहीं चल रहा है, तो उस स्टेट में ये राष्ट्रपति की पावर है कि वहाँ पे एमरजेंसी लागू कर दें, प्रोक्लेम कर दें। इन दिस सिचुएशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट्स एज एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इस सिचुएशन में गवर्नर जो है प्रेसिडेंट का एजेंट के तौर पे काम करता है एंड रन्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, और स्टेट का गवर्नमेंट चलाता है उसके बिहाफ पे। राइट टू सजेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस मीन्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ये 2 वर्क्स जो करता है ये है, एंड एनी अदर मैटर दैट मे बी रेफर टू द कमीशन बाय द पार्लियामेंट, और वो मैटर को करता है जो कि इसको रेफर किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो 2 काम है, 2 मुख्य काम है, 2 मेन वर्क ऑफ फाइनेंस कमीशन। वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, एंड द अदर इज any other matter that has been referred to it by the parliament. Good morning हरमन बच्चे, good morning.
describe state list. State list, there are 62 subjects right now. Right now, state list में originally 66 subjects थे, but then decreased to 62. Now there are 59 subjects only in the state list, and these subjects are of local interest, local importance, और उस state की, उस राज्य की importance के according होता है, included in the state list. The list contains subjects like public order, police, public health, local government. ऐसे subjects इसमें आते हैं. The state government can make the laws on this list. State government इस पे law बनाती है. Right, two factors which are responsible for the disputes between union and the state. दो फैक्टर क्या है? पार्शियल बिहेवियर ऑफ गवर्नर, गवर्नर जब अपनी मनमर्जी करने लग पड़ता तब, और फाइनेंशियल मींस जब स्टेट्स को कम दिए जाते हैं तब. ये दो चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं. नेक्स्ट है, हु कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा विद द रेजोल्यूशन ऑफ 2/3 मेजोरिटी can recommend union parliament to create new India service, new all India services. जैसे ISPCS होते हैं ना, IS होता है स्टेट के लिए, उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं. इसी तरह IFS होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज होता है, IES होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होता है. इस तरह की कोई सर्विस क्रिएट करने के लिए कह सकते हैं, या ऑल इंडिया लेवल पर ये सर्विसेज काम करती है. जबकि स्टेट लेवल पे PCS PPSC काम करती है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन काम करती है. तो ये इसकी रिकमेंडेशन राज्यसभा देगी, तो पार्लियामेंट इसको करेगा. यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे तो आप पूछ सकते हैं, और सभी को से यही कहूँगा, क्लास को लाइक करके शेयर कर दें प्लीज़. अगला है 4 मार्क्स क्वेश्चन आंसर. Describe 3 lists of the legislative relations between union and state. Describe 3 lists of legislative relations between the union and the state. So there are 3 lists, as we know that. One is union list. It contains 98 subjects now, and the subject of national importance have been included in this. And these subjects are basically concerned with the entire country. The union parliament has power to make laws on it. So this is union list. State list, originally 66 subjects were there, then it reduced, it was decreased to 62. Now there are 59 subjects in it, and these are of local importance. Subjects like public order, public health, local government have been included in this list. Then concurrent list, it originally contained 47 subjects, now it has around 52 subjects. The subject which are common to the state as well as center, and more than once, more than, right, 2 states, those subjects have been included in it, right. Simran Kaur, good morning. तो concurrent list है, both union as well as state can make laws on it. तो तीनों लिस्ट क्लियर हो गया. रेजिडुअरी पावर जो मैंने बताया था आपको, वो सेंटर के पास है, कीप इन माइंड. डिस्कस फाइनेंस कमीशन राइट टू फंक्शंस. फाइनेंस कमीशन अंडर 280 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट की जाएगी. द ड्यूटी ऑफ द कमीशन प्रेसिडेंट about the distribution of financial means and between the union and the state, and its mainly two functions are about the distribution of finance between the union and the states, and to give suggestions regarding the matter assigned to it by the parliament. Next question है, explain about article 356. 356 article is about constitutional emergency. Under article 356, president issues proclamation of president's rule in a state if he deemed fit as constitutional machinery has broken or failed in that state. If constitutional machinery fails, then in that situation, president proclaims president's rule or constitutional emergency in that state. In this situation, the governor of the state acts as the agent of the president, and he runs the government of the states.
and factor responsible for disputes are partial behavior of the governor on this and lack of financial means of the states are two main factors. What do you mean by financial emergency? Financial emergency is proclaimed under Article 360 by the President if President is satisfied that situation in the state has arisen of financial instability. In that situation, he can proclaim financial emergency. If he thinks that the credit of India is threatened, he may proclaim then. The issue of such proclamations amounts of the imposition of financial emergency in the country. During the period of financial emergency, the government of India gets the power to issue direction to the state governments. Government of the states virtually come under the control of the central government. अगर financial emergency हो तो financial emergency 360 आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है और इसमें बहुत सारे सैलरीज और चीज़ों पे भी कट लगता है एम्प्लॉयज़ के. Right circumstances when the Union Parliament gets power to make laws on the subject given in the state list. Number 1, resolution pass करता है राज्यसभा. Then if the resolution is passed by Rajya Sabha, then if 2 or more states legislature pass resolution requesting parliament to regulate matter falling in the state list, तो उस state list पे वो law बना सकते हैं. When the proclamation of an emergency is in operation, तब बना सकते हैं. And when the state constitutional machinery has broken down under Article 356, तो तब ये 4 सिचुएशन है जब कि यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर चले जाता है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का. तो चलिए अभी यहीं तक थी. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंग्लिश क्लास में. ओके, तो इंग्लिश क्लास के लिए जस्ट वेट, मैं फटाफट ही लिंक आपको सेंड करता हूँ, मतलब टॉपिक से शेयर करता हूँ. तो कोई क्वेश्चन? चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में. मॉर्निंग दीपिका संदल, गुड मॉर्निंग. ठीक, मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में. फिर ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. इसका लिंक ज़रूर शेयर कर देना आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ. सो सी यू इन इंग्लिश क्लास.